What's up, guys? This is your boy UNB, and welcome back to my channel once again. And yeah, I know what you guys are thinking right now. बहुत टाइम से मेरा ब्लॉग आया नहीं था अभी तक, और लास्ट ब्लॉग मेरा आया था दिसंबर को, एंड दिसंबर के बाद आई वाज नॉट एबल टू बी दैट कंसिस्टेंट. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट या आई मीन मैं लास्ट मेरा व्लॉग था जब मैं नॉर्थ ईस्ट टूर कर रहा था और मैं गया था दीमापुर परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद का मैंने व्लॉग डाला नहीं है. इसके बाद आई एम गोना पुट लाइक व्लॉग्स अबाउट व्हाट आई डिड आफ्टर दीमापुर. तो या एंड आई एम सो सॉरी, बहुत सारी जगह पे मैं गया था और मैं वहाँ पे जाके व्लॉग नहीं कर पाया. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टू Hornbill Festival, I have been to so many other festivals and did so many shows, but मैंने document नहीं किया. तो अभी जाके I'm in Mumbai right now, and अभी I'm planning to do it again now. तो keep supporting and ऐसे ही प्यार देते रहो. और आज का vlog है ईटानगर के बारे में, and मेरे को बहुत मज़ा आया था वहाँ पे, and I hope you guys gonna like it. So देखो एक बार, चलो जाओ. What's up, guys? So finally we are here after like 10 hours of journey. We are here at Naharlagan. So this is like a 1 hour is probably far from Itanagar, and apparently this is known as the twin state. Sorry, the twin capital. How are you feeling, brother? I'm feeling hungry, Fresh? man. No fresh? No fresh. Oh, yeah. Yes, brother. Hello, welcome to Arunachal. Yes, welcome sir. to Naharlagan. Hi, brother. Chalo, let's go. What's up, bro? How are you? Hey, paparazzi लोग आ जाते हैं कहीं से भी घूम के. So we are in Club Y. होटल का नाम क्या है? Oh, Y International. Yes. So we are in Y International finally, and yeah, today is the main event, and yeah, मज़ा आ रहा है. मस्ती करेंगे आज. तो आजकल लोग मेरे को बहुत पूछते हैं कि कैसा लग रहा है ऐसा टूर करके, जगह जगह में जाके शोज़ बैक टू बैक एंड ट्रैवलिंग हियर एंड देयर. तो या आई मीन काफ़ी मज़ा आता है यार, काफ़ी अच्छी, ऑफ कोर्स बहुत सही लग रहा है अभी. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड टू ड्रीम लाइक कपल ऑफ ईयर्स बैक. 1-2 साल तक ये मेरा एक सपना था, एंड अभी finally it's happening. तो it's like a different feeling, man. But the thing is, like, मैं ज़्यादातर कभी ऐसे चीज़ें को express नहीं करता हूँ, and I'm not that good at like expressing things. तो लोगों को शायद मेरे को देख के नहीं लगता कि मैं इतना खुश हूँ, but I'm having a really good time, and बहुत सही लगता है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं अभी. and on top of that, जो आपका सपना था to go to places and perform for your fans and perform for your people, that is a different feeling, bro. And बहुत ही सही, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को. Exciting, and the people were really nice, and सब कुछ बहुत सही था, and गुवाहाटी में भी बहुत सही गया. So I'm performing tonight at Y Club, and this is like Y International, so it's nearby, I think, for everyone. And this is for the first time I'm performing Itanagar, and I'm getting so much of messages. I used to get so much of messages before Hustle also. बहुत सारा प्यार मिलता था यहाँ ईटानगर से. So let's see, अगर आज प्रैक्टिकली अगर मेरे को दिखता है कि नहीं कि यहाँ पे कितना सपोर्ट है बोल के. So I request everyone to just come and let's have fun and let's have a good time, and बाद में जाके we can just reminisce about all these things, right? So yeah, I mean, like, आ सकते हो आप Y Club. Thank you. बना दो तुझे मैं तो घाट ना घर का, दिमाग मेरा तेज यूज करो ना मैं पल का, मैं तो सारे बंदे बोले यहाँ दावे दावे, वादियों में घूमे दाजू बोले दावे दावे, अपना स्वैग हट के बोले तो दावे दावे, बस बोल मैं खिला कुछ लाइफ माय मोमो.
show I have ever done. Itanagar, I really love you guys, man. Like, fuck, it was so good. Like, I don't know like how to say it, but बहुत ही ज़्यादा सही सीन था. And I was not expecting कि उतने सारे लोग आएंगे. And you know, लोग मेरे गाने गा रहे थे यार. I was not like expecting that, but it just happened. And yeah, man. So the next stop is West Kameng. So अभी हम लोग जाएंगे West Kameng. So that is one other side of Arunachal Pradesh. तो अभी वाला तो club scene था, and that's gonna be more like a festival. So अभी हम निकलेंगे, है ना. So I'll keep you posted about everything. चलो.